बीटी कॉटन के बारे में सबसे ज़्यादा ईल्ड आता ही करके बहुत सारे सोइंग करते हैं, लेकिन कई जगह उनकी चीटिंग भी होती है। इसलिए हम इस साल एक्शन लेना चाहते हैं। इस साल कम से कम 5 लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। The Genetic Engineering Approval Committee and the government are entirely responsible. Yes, Maheko and Monsanto want to make money. They don't care about farmers. But surely the government should care about its farmers. And it has been an act of great irresponsibility and terribly sad that the government decided to go this way. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का गाइडेंस ठीक से नहीं मिल रहा। वो तो जैसे सेल करने वाले या वो कृषि केंद्र वाले जो बोलते तो बस उनके भरोसे ले लेते, उनको कहाँ इतना नॉलेज रहता। A very dubious marketing strategy is adopted to market these seeds. Agents use bribe and other tactics to reach farmers directly, selling at night without giving any receipt. The packet does not have any branding. Farmers get talked into higher yield with low-cost original seeds. They do not have any way of verifying the claims made by agents. Yields more than 10 quintal per acre are promised. In reality, only 2 or 3 quintal per acre are obtained. कंपनी से फार्मर तक के का एक चैनल है, उसमें दोनों भी है, मतलब कंपनी भी बिलिंग है, जो डायरेक्ट फार्मर से जाकर डोर टू डोर जाकर उनसे कांटेक्ट करके वो बेचते हैं। दूसरा कि शॉपकीपर से डीलर्स लोगों के माध्यम से भी जाता है। जिन डीलरों को ज़्यादा पैसा कमाने की प्रवृत्ति बनी हुई है वो लोग उसको अपने दुकान से भी बेचते हैं, ऐसा देखने में आया है। इलीगल बीटी के खिलाफ में अभी तक कोई भी कंप्लेंट लॉन्च नहीं हुई है। The other thing that was extremely strange to watch, the government itself in its approval document had said that this BT cotton of Maheko and Monsanto is not recommended for small farmers because it's a very expensive cotton, it's a high-risk cotton, and the Genetic Engineering Approval Committee itself had qualified this approval saying it is not recommended for small farmers. And yet, it was allowed for planting in all the states where there are small farmers, including in non-irrigated areas that are dependent on the monsoon. 25 एकर 3 शेतकऱ्यांचं आणि माझं घरचं होतं बटीचं लावले 450 ग्रामवाले 35 पॅकेट ते झाले जवळपास 26,000. त्याचा अनुभव ते खूपच नापीक निघाला, म्हणजे फक्त 1.5 क्विंटलचा ॲव्हरेज आला मला. त्याचं कारण असा की त्याच्यावर ज्यावेळी पाऊस चांगला पडतो तेव्हा जो उत्पादन येतो त्याच्यावर होणारा खर्च, बियाणे असो, खते असो, औषधे असो, मशागतचा खर्च असो, मजुरीवरचा खर्च असो, तो परत येतो. परंतु त्याच्या स्वतःचा जो मशागत करण्याचा खर्च आहे तो कधीही परत येत नाही. म्हणजे आपला शेतकरी आपल्याच जमिनीवर बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर म्हणून काम करतो आहे. Gene Campaign had demanded from the Agriculture Ministry that Maheko Monsanto Company be made to pay compensation to those farmers who had suffered losses. Maheko Monsanto had flatly refused to pay any compensation. The government allowed it to have its way, and the company was not made accountable for its actions. उसमें जो बीटी का जो बियान है वो जो है सीड, इसकी वजह से घाटा हुआ ये बात नहीं है. एक ही लट का माल अगर दो गांव में गया होगा, 10 पैकेट हमारे गए होंगे, 2-3 पैकेट नहीं निकले और बाकी लोगों के निकले, तो फिर उसमें कंपनी का दोष नहीं माने. आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट हैज डिस्करेज द फार्मर्स कि कपास मत लगाओ. इस साल भी सीएम ने अभी बता दिया है कि कपास मत लगाओ. Monsanto does large-scale propaganda that its seed is so much in demand, they are not able to meet the demand. But this is not true. Local hybrids have performed far better than the Monsanto BT cotton. The cotton economics in India is confused and the government's cotton policy is not clear. What is clear is that the economics of BT cotton simply did not work for small farmers. Input costs were almost rupees 1,000 per acre higher than for non-BT cotton. The cost of the seed alone was 4 times as much as for good varieties of non-BT cotton. Savings on pesticides were merely rupees 217 per acre, while seed was rupees 1,200 per acre more expensive.
The failure of BT cotton was bitter and widespread, and 60% of BT cotton farmers were unable to recover their costs. जर आपण एका माणसाला निसर्गाबरोबर जुगार खेळायला सांगतो आहे तर त्याला त्याच्याबरोबर क्रॉप इन्शुरन्स चांगली द्यावी लागेल. BT cotton farmers suffered an average loss of rupees 1,725 per acre. Non-BT cotton farmers did better in all categories of farm types: low, medium and high yielders. Mahabeej Company of Maharashtra government speaks about BT seeds. शेतकऱ्यांना त्या वाणापासून फार चांगलं उत्पादन मिळालेलं आहे आणि कार्यशाळा वगैरे घेऊन शेतकऱ्यांना आम्ही त्या वाणाबद्दल माहिती दिलेली आहे. यावेळेस ह्या वाणामध्ये निश्चितच त्याच्यामध्ये वाढ होईल. बीटीचं जे जीन्स आहे हे जीन्स ज्वारी, कडधान्य, गहू, तांदूळ हे जीन्स येणार आहे आणि खूप पिकणार आहे. मी सरपंच साहेबांना अशी विनंती करतो, या बीटीच्या विरोधात आपल्या समोर आपल्या स्टँडवरती एक बोर्ड लावा का ज्या बीटी कंपनी येईल त्यांना गावात विरोध. The effects of BT cotton do not limit themselves to farmers and crops. BT cotton has had side effects on the environment and animals as well. In Vasri Tanda village, animal deaths were reported due to grazing on BT plant residues. 3 cattle and around 18 goats had died. There are at least 6 farmers who claim to have lost their animals because of grazing in BT cotton fields. कि जब मैंने बीटी लगाए और कपास आ गया, वो खेत में चूहे ने कुछ खाई नहीं कपास, और इधर के खेत में जो सादी वैरायटी थी तो उसमें चूहे ने खा लिए. मेरा मतलब ये नहीं है कि किसान के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन किसान के लिए अच्छा है. अगर वो सरकी का तेल निकाले गए और वो इंसान ने खा गए तो उसका क्या हाल होएगा? जाहिर है कि जो उत्पादित होता है तो इतना उसका कॉटन सीड जाएगा कहाँ पे, तो उसका तो एक मेन पर्पस है, ऑयल बनता है. कॉटन में ऐसा एक जीवाणु है कि जो अवांतर पेस्ट को ही मार डालता है, तो उसका ज़रूर कोई जानवर बोलो या ह्यूमन को साइड इफेक्ट तो उसका होना है, तो उसका निकालना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए कोई परफेक्ट टेस्ट तो अभी तक के कुछ आई नहीं है. This village is dominated by the Banjara community, whose primary occupation is animal rearing. There are 100 to 110 families living in this village whose second occupation is agriculture. They have been cultivating cotton as their main crop for many years. However, BT cotton cultivation has started only for the last 2 years and have seen animal deaths with inexplicable symptoms only since then. ऐसा हमारे देखने में नहीं आया, लेकिन जब कभी हम गांव में विजिट देते तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसने बीटी खाया था. The district authorities are clueless. Nobody is investigating anything. Nobody has done a post-mortem to find out did they die because of BT toxin, did they not die because of BT toxin. So farmers report stories. There is an instance where we met farmers who said that in that area where BT cotton is being cultivated, the mangoes have stopped flowering, so there's no fruit in the mango trees around there. Now, is this because of the BT cotton? Is it because of some other factors? Somebody should look at this. इथे जर असा घडलेला आहे तर त्याला त्याच पद्धतीने पुन्हा त्याच सायंटिस्टला सांगून की हे याच्यात काय खरं आहे. In the meantime, the conventional varieties that are capable of getting good results are not being promoted. Data is fudged from 4 quintals per acre to 14 quintals per acre to make yields look good in the reports. The GEAC has gone and approved new varieties for Punjab, Haryana and Rajasthan without any review of the reported poor performance of the Monsanto cotton. There are 62 BT cotton varieties in India now. Farmers are confused, crop failures are frequent, and the regulatory authorities remain disengaged from what farmers are suffering.